আজি নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছে এক বৃহৎ মহাৰেলী আয়োজন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখভাগত মই উপস্থিত আছোঁ। বহু কংগ্ৰেছ কমিটি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ভিৰ কৰিছে। অসমৰ পৰাও কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আহিছে। মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বৰাকৰ এজন নেতা আছে। আজি কংগ্ৰেছৰ এক মহাৰেলী আছে আৰু আৰম্ভ হোৱা ৰেলী মহাৰেলী লাল কিলা ময়দানত আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে ৰামলীলা ময়দানত আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত যথেষ্ট কৰ্মীসকলে ভিৰ কৰিছে। কি বিষয়ক লৈ আচলতে কংগ্ৰেছে এবাৰ আগবাঢ়িব বা এই যি ভোট চুৰি প্ৰসংগ কি ধৰণে আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব? আজি চাওক, আজি যেটো আমাৰ মেগা ৰেলী এইটো হৈ আছে বুট চুৰ গদ্দিচোৰ। এই বুট চুৰ গদ্দিচোৰৰ যেটো ওপৰত যেটো মেগা ৰেলী হ'ব সেইটো গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা মেছেজ যাব যে বিজেপি আৰু বুট চুৰি কৰি বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে। বিজেপি এতিয়া ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়া বন্ধ কৰি দিছে। ৰাইজে বুটাৰে ভোট বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। বিজেপি অকল গদ্দিত থাকিব বিচাৰিছে বুট চুৰি কৰি। এতিয়া বিহাৰত বুট চুৰি কৰিলে, আজকে বানাৰসত বুট চুৰি কৰি মানে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুট চুৰি কৰি যেতিয়া আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী লাগে। আজিৰ যেটো মেগা ৰেলীত গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা মেছেজ যাব যেটি বুট চুৰি বন্ধ হ'ব লাগে, বুট চুৰি বন্ধ হ'ব। আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনে যদি বিজেপিৰ লগত মিলি যেটো বুট চুৰি কৰাৰ যেটো সুযোগ সুবিধা কৰি দিছে এইটো আজিৰ পৰা আমাৰ বন্ধ হৈ যাব লাগে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা প্ৰতিবাদী মেছেজ যাব। আৰু আপুনি আশাবাদী নে যে যেহেতু 2026ত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, ভোট চুৰি যি কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছে হাতত লৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ ইম্পেক্ট নিশ্চয় পৰিব। অসমত ভোট চুৰি কৰিব নোৱাৰে। অসমত যেটো বিহাৰত চুৰি কৰিছে অসমত চুৰি কৰিব নোৱাৰে। কিয়? আমাৰ গৌৰৱ গগৈ আমাৰ প্ৰদেশ সভাপতি আছে। গৌৰৱ গগৈ য'ত আছে তাতে ভোট চুৰি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইটো এটা প্ৰভাৱ পৰিব। আমি গোটেই কংগ্ৰেছ কৰ্মী এতিয়া সজাগ হৈছোঁ। আমাৰ BLA বিলাকক পুৰা আমি সজাগ কৰি দিছোঁ যেনেকা ভোট চুৰি কৰি ভোট যাতে কোনোবা হোল্ডিঙৰ এগেইনষ্টত ভোট সোমাব নোৱাৰে, কোনোবা হোল্ডিঙৰ এগেইনষ্টত ভোট কমাব নোৱাৰে। এইটোৰ ওপৰত আমি BLA বিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আৰু এইটো মেছেজ বোলে আজিৰ মেছেজটো গোটেই ইণ্ডিয়াত আমাৰ অসমত যাব। আৰু অসমত আমি 2026ত এবছলিউট মেজৰিটি লিয়ে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি যিহেতু ভোট চোৰ গদ্দি চোৰ এই যি শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছে হাতত লৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ৰামলীলা ময়দানত এই বৈঠক আৰম্ভ হ'ব। মোৰ সৈতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল কংগ্ৰেছ লোক আহিছে তেওঁলোক উপস্থিত আছে। মই পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰোঁ। আপ কাहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो ये जो भोट चोरी का प्रसंग को लेकर पूरा भारत भर में कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये आशा करते हैं आप लोग कि इसके बाद कांग्रेस में कुछ इम्पैक्ट आएगा? कांग्रेस में इम्पैक्ट नहीं आएगा, पूरे देश पे इम्पैक्ट आएगा। ये जो वोट चोरी का कार्यक्रम है ये बंद होना चाहिए और सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। कोई यहाँ रोहिंग्या नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। আৰু এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এই যি ৰামলীলা ময়দানৰ ভোট চোৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী এয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ যি কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ৰামলীলা ময়দানৰ পৰিৱেশ দেখাম। এই মুহূৰ্তত এই ধৰণে তেওঁলোকে আহিছে, प्रतिवादी कार्यसूची रूपायन करिছে। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आप एक अलग वेश पे आए हुए हैं, आज एक बड़ा कार्यक्रम है आप लोग का, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में? वोट चोर गद्दी छोड़, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के अंदर मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि वोट चोरी से बनने वाली सरकारें इस देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या होगी। वोट चोरी से बनने वाली सरकारें आम नागरिकों की सुविधाओं से उनको वंचित करेगी, क्योंकि जो सरकारें वोट चोरी से बनेंगी वो निश्चित रूप से वोट की परवाह नहीं करेंगी। संविधान के तहत गरीब को भी और अमीर को भी एक वोट का अधिकार है। अगर वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो गरीब को पूछेगा कौन? मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अपने अतीत को याद करो। ये जो तख्ती है इस तख्ती को बना करके ही, इस तख्ती को प्रदर्शित करके ही मैं अपने आप में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अतीत को याद करो। जिनको भी संविधान से अधिकार मिले हैं, वे संविधान की रक्षा के लिए, स्वयं की और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जागो जागो जागो। यदि आज नहीं जागे तो बहुत देर हो चुकी होगी। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से
पूरे देश की जनता को, जिनको भी संविधान से अधिकार मिले हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जागो और अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस वोट चोरी को हर हाल में रोकना होगा। चाहे से सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, करो या मरो का नारा दे करके हमको इस मुहिम में हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। आप देखिएगा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी से बनने वाली सरकारें संविधान और लोकतंत्र की हत्या करेंगी तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। इससे देश सुरक्षित ही रहेगा। इसलिए देश और देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए वोट चोरी को हर हाल में रोककर संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा। जागो मेरे देश के नागरिकों, जागो। आम नागरिकों से मैं आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे से आया हूँ। यहाँ से 650 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रथ आप देख रहे हैं, ये रथ जो आप देख रहे हैं, इसी रथ के साथ में मैं हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा में भी उनके विचारों और उनके उद्देश्यों और उनके को लेकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चला हूँ और इस मुहिम में भी कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए यहाँ पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ। धन्यवाद देना चाहता और এই মুহূৰ্তত মই দেখাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আসলতে এই ধৰণে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল আহিছে। অসমৰ কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকল দেখাইছোঁ, ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে। आप कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटका बीजापुर से है। कर्नाटक से। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, ये जो अभी जो चल रहे हैं वो बीजेपी का सरकार मोदी बना रहे हैं, इसको विरोध में जो हमारा नायक है राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए हम कर्नाटका बीजापुर से आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকল আহিছে। কিছু সময় পাছতে 1 বজাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ৰামলীলা ময়দানত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে। ভোট চোৰ গদ্দি চোৰ এই শীৰ্ষক অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। তাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ মই কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভোট চোৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।